एक गेम खेलते हैं। हमारे पास एक एरे है, इस तरह से एक लिस्ट है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इस लिस्ट में से कोई एक नंबर चुन लें, कोई एक नंबर पिक कर लें। इस नंबर के बारे में कोई स्पेशल बात नहीं है, आप रैंडमली भी कोई नंबर पिक कर सकते हैं। तो आप रैंडमली पिक करते हैं एंड लेट्स से आप 4 पिक कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, आई जस्ट थॉट अबाउट इट, सो आप 4 पिक कर लेते हैं। व्हाट विल आई डू? आई विल डू दिस, आई विल स्प्लिट दिस अरे अराउंड 4। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी 4 से छोटी चीजें हैं वो मैं 4 के लेफ्ट पे रख दूं, फिर 4 खुद आ जाए, और फिर जितनी भी 4 से बड़ी चीजें हैं वो उसके राइट पे आ जाए। मतलब मैं इस तरह से इसको स्प्लिट कर दूं, जो 4 से लेस देन और इक्वल टू चीजें हैं वो उसके लेफ्ट पे आ जाए, जो उससे बड़ी हैं वो उसके राइट पे आ जाए। सो फॉर इंस्टेंस, इस एरे को देखते हुए हमारे पास जब इस तरह की स्प्लिटिंग होगी, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 4, एक दो 4 हैं, एक 4 यहाँ आ जाएगा, एक 4 तो यहाँ था, 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और -1 आ गया, और 1 आ गया। ये वो चीजें हैं जो लेस देन और इक्वल टू 4 यहाँ मौजूद है। और ग्रेटर देन 4 वाली चीजें, 13 आ गया, ओके, 8 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, ओके, 6, 17 एंड 7, okay. And then now after this one step, now I see that I have 3 pieces. One of these pieces is just 4, which is which I cannot split. It's just one element. So now there are other pieces, these 2 pieces, जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि इनको स्प्लिट करना है। फिर से आपकी सर्विसेज दरकार है। आप ऐसे करें कि कोई नंबर पिक कर लें, इधर से भी कोई नंबर पिक कर लें, और यहाँ से भी कोई भी नंबर पिक कर लें। तो लेट्स से कि आप कहते हैं अच्छा चलो पहले लेफ्ट वाले पीस के लिए एक नंबर दे देता हूँ। तो लेफ्ट वाले पीस के लिए आप पिक करते हैं एंड यू एंड अप पिकिंग 2, लेट्स से। This just randomly you have picked 2. So when you pick 2, 2 will come somewhere here, and everything bigger than 2, which turns out to be 4 in this piece, will be to the right of 2. And the smaller things, which are -1 and 1, they happen to be to the left of 2. Okay, so this is the split as it will happen. इसी तरह आपसे मैं कहता हूँ कि इसके लिए भी कोई नंबर पिक कर लें ताकि इसको भी हम स्प्लिट कर पाए। तो आप पिक कर लेते हैं, जस्ट एट रैंडम आप पिक करते हैं, यू पिक टू बी, you pick 8, okay. So when you pick 8, what happens? You have 8 here, and to its left you will get the thing that is smaller than 8, which happens to be, well, in this case 5 is smaller, 6 is smaller, 7 is smaller, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, and on the right side, okay, which are bigger than 8, 13 is here, okay, 10 is here, and 17 is here, okay? Right. And then in the next step again I ask you कि आपके पास इस वक्त पीसेस हैं जो कि 1 से बड़े हैं, तो जरा उनके लिए दोबारा कोई एलिमेंट पिक करते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर इस पीस के लिए यू एंड अप पिकिंग -1। So if you end up picking -1, -1 will get its piece. There's nothing smaller than that in this piece. There is nothing smaller than -1, so it gets to the left. There is nothing to the left of it, and then 1 becomes one piece. And in the 5 1 in the 5 6 7, let's say you end up picking 6, and what will happen is that this will happen. 6 will go here, and 7 will go here. In the 13 10 17, let's say you end up picking 10, so 10 will go here. Nothing is smaller than 10 in this piece, and 13 and 7 will go here. Now in the last phase here, you are just going to see, well, there is just one element here, which is only one piece here that has more than one elements. So I ask you to pick something from it, and you end up picking 17 or maybe 13, doesn't matter. Let's say you pick 17. So 17 get its piece, and to its left you have 13. And now there is no piece of more than length 1, and we stop. Okay. And what we are left with in this last line
is easy to see. So we have a sorting algorithm. We have sorted this data. And this algorithm, though it might seem to you that this algorithm is not very clever, probably because it seems to work in a kind of unsymmetric way. Lekin, this is actually the fastest algorithm that we know of, the fastest sorting algorithm that we know of in practical terms. Or it is very quick, so quick that it's called quick sort. Okay. And what it is, as you have just seen, is repeated partitioning. जिस चीज को मैं split कहता रहा हूँ, उसे हम partitioning भी कह सकते हैं कि repeatedly partition हो रहा है. And it's just partitioning around anything. Okay. Why does it work? Why does it sort? I've just shown you that it works. How does it work? Well, थोड़ा सा एक दफा दोबारा इन phases को देख लेते हैं. पहले आपने पिक किया था 4. जब एक दफा आपने पिक 4 कर लिया, तो 4 जिस जगह पे गया, 4 is already sorted. Obviously sorting के बाद 4 ने यहीं आना था, इसलिए क्योंकि उसके लेफ्ट पे ये एलिमेंट्स आने हैं, वो उसके लेफ्ट पे जा चुके हैं, और उसके राइट पे ये सारे एलिमेंट्स आने हैं, वो उसके राइट पे जा चुके हैं. 4 तो सॉर्ट हो गया. लेकिन देयर इज अनदर थिंग आल्सो, ये सारे एलिमेंट भी कलेक्टिवली सॉर्ट हो गए. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस के 4 2 -1 1 ये अपनी करेक्ट जगह पे आ गए. इन्होंने इसी एरिया में रहना है, इन्होंने इस एरिया से बाहर नहीं जाना, इन्होंने कभी इस 4 के राइट पे नहीं जाना, इन्होंने कभी इधर नहीं जाना. सो दे आर कलेक्टिवली सॉर्टेड. सिमिलरली these numbers are collectively sorted. When, for instance, I split this big list around 8, what happens? 8 is obviously sorted. Okay, but 5 6 7 are also collectively sorted. इस केस में by chance ये individually भी sort हो गए, लेकिन collectively तो definitely sorted है. इसी तरह ये जो चीजें हैं 13 10 और 17, they are also collectively sorted. Okay, meaning that they are in their right area. And as the pieces become smaller and smaller, every piece of length more than 1 is collectively sorted. And when they become pieces of size 1, they are actually individually sorted also. So for instance, when this is split, 10 becomes individually sorted, it goes to its right place. 13 and 17 are now collectively sorted, but they also, by chance, they are individually sorted at this level. But when we get to the last level, everything is individually sorted. And what we have is a sorted array, and this is quicksort. In the next part, I'm going to write this algorithm in terms of code. So I'm going to give you a precise description of this algorithm. And I'm also going to talk about how we will do this partitioning. Okay. And the number that we partition around, okay, that number has a special name. It's called pivot. And as we said that we just picked any number as pivot. We didn't care pivot kya tha. Picking a pivot has its implications. Uski baat hum karenge. Partitioning repeated hogi. So I hope I will leave you. I will leave you with this. I will leave this video with this particular claim that this is a divide algorithm, at least a divide algorithm. Obviously, I've told you that this is the fastest known algorithm in practical terms, so it must also be conquer. Okay, it must also be combining the results cleverly. But at least you can see, you should already be convinced that it's a divide algorithm, because what we do is we divide the initial array into multiple pieces. Okay, not necessarily of equal size. So unlike merge sort, we are not dividing this array into equal size. So one piece could be bigger than the other piece. But whatever the sizes of these pieces, we then further divide them around their pivots. And then we further divide those pieces until we reach base cases, which are of size 1, and they cannot be further divided. So this is definitely a divide algorithm. And it's also a divide and conquer algorithm, as we will see. So in the next part, I'm going to do the formal description, code, etc. And then in the third part after that, I'm going to do an analysis of quicksort, which will reveal some
surprising results which will teach us important lessons. So stay tuned for that.